Okay, fine. So come to the question. There is a question. Write down everyone. If under root 3, there is a confusion to some of you. 1.37, 1.732, find the value of 2 upon root 3 minus 1. Okay, this is the question I have given in the worksheet. Okay, so this is very simple question. Actually, given the what is given in question, 2 upon under root 3 minus 1. Okay, first of all, we can rationalize this number. So under root 3 plus 1 whole upon under root 3 plus 1. Okay, so we have to rationalize this. Numerator is multiplied by numerator and denominator is multiplied by denominator. So this is 2 under root 3 plus 1. Okay, and denominator, it is the formula of a square minus b square. So under root 3 to the whole square minus 1 whole square. Okay, now come to the point. Next step, 2 under root 3 plus 1. Okay, and this is 3 minus 1. Okay, so this is 2 root 3 minus 1 whole upon 2. 2 and 2 gets cancelled. The value of under root 3 is also given in the question. So this is 1.732 minus, sorry, this one is plus. Okay, this one is plus. So the answer is 2.732. Okay, anybody having any confusion in this question? No, sir. Okay, this is very simple. Okay. One more question is there. Okay, one more question is there. Find the value of a and b. Find the value of a and b. Okay, and the question is under root 11 minus under root 7 whole upon under root 11 plus under root 7 is equal to a minus b under root 77. Okay, so this is also from rationalize, है ना? So first of all, we have to solve this one. Under root 11 minus root 7 whole upon root 11 plus root 7. We have to rationalize it from the denominator. So this is under root 11 minus under root 7 whole upon under root 11 minus under root 7. Okay, so in the numerator, the formula is, we have to use the formula a minus b ka whole square. Okay, and in the denominator, a square minus b square. Okay, so use the formula and we get the answer. It is a square plus b square minus 2ab. Okay, whole upon, here we can use it 11 minus 7. Okay, so this is 11 plus 7
minus 2 under root 77. Okay, whole upon, है ना, whole upon 4. Okay, got it everyone? Anybody Yes, having any sir. problem up to this? No, sir. Okay, No, sir. now I am solving this here. So this is 11 plus 7, it is 18. Okay, minus 2 under root 7 whole upon 4. Okay, now we have to take common. So this is 9 minus under root 77 upon 4. Okay, so 2 2s are 4, and after that we can write down the answer in this way. This is 9 upon 2 minus, this is minus under root 77 upon 2. Okay, so what is the value of A and B here, Harsh? Harsh, what is Yes, the sir. what is the value of A and B? Yes, Anushka, tell me. Sir, A is 9 by 2 and B Oh. is 1 by 2. Very good. A is 9 by 2 and B is 1 by 2. Don't write under root 77 because the value of B we can find out from this. Okay, so because this equation is in the form of A minus B under root 77, and see here, this is also in A minus B. Okay, A minus B under root 77. So this is the 9 upon 2 is the value of A, and under root gets cancelled, and minus gets cancelled. So the value of B is only 1 upon 2. Don't be confused in this question. Okay, got it everyone? Sir, can you explain once more? Okay, fine. Harsh, this is our question, है ना? Yes, sir. This one. First of all, we have to rationalize this. Okay, from the denominator, and a conjugate of the denominator. If this is plus, then we can just multiply by the minus. So in the first step, we can use the formula because under root 11 minus under root 7 and under root 11 minus under root 7, both the values are same. So we can use the formula of A minus B to the whole square. So this is A square plus B square minus 2AB. Okay, and whole upon, in denominator we have used the formula A square minus B square. Okay, just open the all the brackets and we get the answer. It is 11 plus 7 minus 2 under root 77 upon 4. Okay, so this is 18 minus 2 under root 77 upon 4. Okay, and we have to take the common from the numerator. So 2 is the common, है ना? So 9 minus under root 77, 2 2s are 4. Okay, so the value is, I am just skipping one step here. One step is there, 9 minus under root 77 upon 2. Okay, and we, in the expanded form, we can also write 9 minus under root 77 upon 2 in this form. 9 upon 2 minus and under root 77 upon 2. Okay, Harsh? Yes, sir. So in this case, we this equation is also given in the question, है ना? So the value of A is 9 upon 2 minus value of B is 1 upon 2 only, है ना? Because under root 77 and under root 77 gets cancelled. Okay, Harsh, got it? Yes, sir. Yes, Okay, sir. there Sir, is can you tell me? yes, Sir, can you tell me, sir, 2 plus under root 3 represent on the number line? better just a minute. I am telling you. First of all, there is one more important question, है ना? Write down it first, then we will discuss your question. Okay, write down everyone. It is if x upon y, I am giving you the question, but some of you having the problem in this question. X upon y plus
y upon x is equal to -1. Find the value of x cube. Okay, this is x cube minus y cube. Okay, we have to find the value of x cube minus y cube. Okay, so this is the question. Now we know that, first of all, we know that, Harsh, what is the formula of x cube minus y cube? Tell me. Sir, a minus b, sir, bracket close, sir, a square minus ab minus b square. No, it's wrong. First, tell me once again. Sir, a minus b, bracket close. Just a minute. X, suppose that x minus y, bracket close. Okay. Sir, x square. X square. Okay. So minus. माइनस नहीं होता है बेटा. यस अनुष्का, क्या होता है? Sir, plus. It is plus. Okay, xy है ना. Then again plus y square. Okay, Harsh, now get it? Harsh, Yes, sir. don't be confused. Okay, so this is the formula of, है ना, and we have to write down, it is equation number 1. Okay, this is equation number 1, है ना. Now what is given, that in this question given is x upon y, है ना, x upon y plus y upon x is equal to -1. Okay, so first of all we take the LCM x y, है ना, and now we have to cross multiply by x. Okay, so this is x square, है ना, plus y square is equal to -1. Now again we have to cross multiply it. X square plus y square is equal to minus xy, है ना. What it? Again x square plus y square plus xy is equal to 0. यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए. Sir, can you explain again? Who, Nida? Okay, see here beta, this equation is given. Mute yourself, all of you. So this equation is given in the question, x upon y plus y upon x is equal to -1. Okay, we have to just cross multiply it, है ना. So this is x square plus y square upon xy. Xy is the LCM, is equal to -1. So x square plus y square is equal to minus xy. Now we have to move this towards the equal to. So it is equal, x square plus y square plus xy is equal to 0. Okay, now after this what can we do? We are doing multiplying by देखिए, अब according to the Euclid, if we are multiplying by the same number to the both sides, then the number is same. Okay, so we have to multiply it by x minus 1. Okay, x minus 1 on the both sides. Okay, then we get what we get. Okay, so we get, अब देखिए इस वाली इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन निकली है, इसी में हम क्या करेंगे, x minus 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे. सो x minus 1, okay, and
x square plus y square plus xy is equal to 0 into x minus 1. Okay, so 0 into x minus 1, it is always 0. So we have to write only x minus 1, x square plus y square plus xy is equal to 0. Okay, anybody having any confusion in this question? No, sir. Now come to the point. According to the means from equation number 1, from equation number 1, okay, अब देखिए x माइनस, यहां पर भी आपको x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, और यहां पर भी x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, है ना. सो व्हाट इज द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1? this and this both are equal, so x cube minus y cube is equal to 0. This is the final answer. X cube minus y cube is equal to 0. Okay, write down everyone. Sir, I have not understood second step. Which one? Sir, x This. square plus y square upon xy equals to minus 1. This one. Sir, about that. This one. Yes, sir. Okay, okay, just see here beta, it is x upon y, okay, plus y upon x, okay, is equal to minus 1. So first of all we have to take the LCM. So what is the LCM? LCM is xy, okay, and if we multiplied xy here, okay, and xy here, okay, यही तो करते हैं हम लोग LCM में. So y and y gets cancelled, x and x gets cancelled, तो बचा क्या? x स्क्वायर यहाँ बचा प्लस y स्क्वायर यहाँ बचा, है ना, इज इक्वल टू माइनस 1, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये माइनस का xy हो जाएगा, और जब आप माइनस के xy को इधर लाएंगे तो ये प्लस का xy हो जाएगा. वेरी सिंपल. ओके, गॉट इट? Sir, then we should multiply on the right hand side also. बेटा वेयर? Sir, you have written minus 1, so we should write minus xy also there. I'm not getting you. Where? We have right after this. Sir, We where have to. we have taken LCM. हाँ. Sir, so when we have multiplied x and y, so in the right hand side also we should multiply, so that No. the equation remains No, same. no. That is different. That is different. Okay. You can say that ki we have to we have multiplied by xy in this side, right hand side. है ना? No. Yes, sir. हाँ, no. Don't be confused that. So x square plus y square plus xy. अगर दोनों अगर एक साइड कोई भी नंबर ना होता, ठीक है, यहाँ पर तो ऑलरेडी नंबर है ना, ये तो आपको गिवन था xy, है ना. अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करनी होती है तब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पर था दिस वन. सी हियर, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर x माइनस 1 और x माइनस 1 था ही नहीं, है ना. सो हमें इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ा? x माइनस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया, x माइनस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है. अगर आप तभी LHS और RHS में कोई भी चीज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम दोनों में करते हैं, ठीक है ना. सो डोंट बी कंफ्यूज. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके, this is also very important type of question according to the examination point of view. One more question is very important. After this we will discuss on that. It is clear to everyone? Anybody having any confusion? Yes, sir.
Sir, it's clear. Okay, fine. Now there is one more question. Write down everyone. If x plus y, most of the questions means students are confusing in this question, is equal to 12 and xy is equal to 32, find the value of x square plus y square. Okay, this is the question. Some of the students are very much confused in this question, so don't be confused. Okay, so we this is x plus y is equal to 12 है ना, this is given in the question. Okay, now squaring on both sides in this equation, squaring on, this is squaring on both sides. Okay, so after squaring, this is x plus y to the whole square. Okay, and this is also 12 to the whole square. Okay, now open it, x square plus y square plus 2ab. Okay, this is, what is the square of 12? 144. 144. हाँ, 1 से लेकर और 20 मीन्स क्या 30 तक के सारे स्क्वायर से याद कर लेना आप लोग. So Sir, I have learned. very good. So tell me the what is the square of 26? 576. No, it is 676. 576 is the square of 24. Okay, don't be confused. Sir, I am confused in that. I know you are confused. That's why I am asking 26. है ना? Okay, कोई बात नहीं बेटा. चलो, तो we have to use the values, है ना? This is xy and we have the value of xy 32. Okay, is equal to 144, है ना? So x square plus y square is equal to 144 minus 64. Okay, and 144 minus 64, it is 80. 80. So this is 80 is the answer, है ना? This type of questions is also asked from you in the board exam. ठीक है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन 1 मार्क का इसमें क्या आएगा आपका. ठीक है, it is clear to everyone. This is only 1 mark. So मैंने तो इतने सारे स्टेप लगा दिए हैं. आप अगर ये 1 मार्क का आएगा तो आप इसको मुश्किल से 2 या 3 स्टेप में सॉल्व करके खत्म करेंगे. ठीक है, because in mathematics speed with accuracy is very important, है ना काजल, विधि, Yes. अनुष्का, अरमान. Yes. Okay, sir. स्पीड विद एक्यूरेसी मीन्स स्पीड तो होनी चाहिए लेकिन एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको कितने नंबर का है, वो कितने नंबर का कितने स्टेप में सॉल्व करना है. ठीक है, और आप लोगों को एक और बात बता दें कि सीबीएसई ने थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम का पैटर्न को चेंज कर दिया है. अब आपका 1 साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम हुआ करेगा. ठीक है, सभी को पता है ये बात कि नहीं? No, sir. नो. ओके, Yes, सो sir. पता है ना? Yes, sir. ओके, सो अब आपका 10th का बोर्ड एग्जाम 2 बार होगा. मतलब कि एक फर्स्ट टर्म का एग्जाम 50% जो आपका कोर्स है वो 1 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा जो कि नवंबर में होगा. ओके, और दूसरा जो बोर्ड एग्जाम होगा ये आपका एज इट इज होगा जब आपका होता है मार्च में. ठीक है, इसमें ये 90 मिनट्स का होगा. ठीक है, 90 मिनट्स का, और ये वाला जो है ये पूरा आपका 2.30 मिनट्स. ओके, मींस सॉरी आवर्स, ये आपका 2.5 घंटे का जो होता था वही होगा. ठीक है ना? इससे क्या होगा कि आपका दोनों सिलेबस जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और शायद आई एम नॉट श्योर
कि जो आपका इसमें आएगा वो आपका इसमें नहीं आएगा, ये आप लोग एक बार पता कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तो कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप 10th में पहुंचेंगे तो सर। आपको, हाँ बेटा, Sir, but I listened the 10th board is cancelled. 10th board is cancelled? No, 10th board never cancelled, है ना। 10th and 12th The board, 12th board is only important. हाँ, बोर्ड मीन्स बोर्ड इज कैंसल्ड, बट जो एग्जाम होंगे आपके वो आपके होम सेंटर में होंगे, ठीक है। बोर्ड कैंसिल नहीं होगा कभी, 10th और 12th का बोर्ड कैंसिल नहीं होगा। ये जो आपके लिए आया है कि नवंबर में और एक एग्जाम होगा और उसके बाद मार्च में जो एग्जाम होगा, ठीक है, तो ये एग्जाम्स तो होंगे ही, रहते हैं आपके, होंगे ही, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज, एंड दिस इज मींस बेनिफिट टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, नाउ देयर इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, जो भी की बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। x माइनस 3y, x प्लस 3y एंड x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ओके, सो क्वेश्चन था फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, फाइंड द प्रोडक्ट। बच्चे क्या करते हैं, इन सभी का मल्टीप्लाई करने लगते हैं। सो डोंट बी मल्टीप्लाइड, बिकॉज ये एक ही नंबर का आएगा बस, ठीक है। सो कभी भी ये गलती मत करिएगा कि आपको सीधे उठा के मल्टीप्लाई करने लगे, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन में आपको ये नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट यूज द ब्रेन, ओके, एंड यूज द फॉर्मूला। सो वी कैन यूज इन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, देखिए यहाँ पर x माइनस वाई है, ठीक है, 3y, यहाँ पर x प्लस 3y है। सो व्हाट कैन वी डू, हाँ, The So first we two can term use means that x square minus y square. yes, simple, x And square is minus, x minus plus हाँ, and x plus y. यस, वेरी गुड निदा एंड हर्ष, गुड। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, 3y, सो इट इज 9, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, इट इज 9y स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, एंड दिस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ओके, अब देखिए अगेन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो Yes. ए स्क्वायर, यहाँ पर ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, सो ए स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4, वैल्यू एक्स की पावर 4। नाउ दिस एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 9y स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 9 9 जा 81, y to the power y to the power 4. 4, very good, this is the product of this one, है ना, very simple। Yes, sir. Okay, so don't be confused Yes. in these type of questions, है ना। और if you have any problem in any question, then you can just message me, है ना। And before the exam, maybe on Sunday, we will again conduct this type of special class for you, okay, and you all are just clearing your doubts before one day of the exam, okay, ठीक है Sir, ना। I'm having one question. Yes.